some facts about Surds. Example 4. Yes. Yesterday, if you remember, a Surd was doing a Surd with you. Surd we call, nickname for people like me all over the world. They call it Surds. So a Surd doing Surd with you. So that is on a lighter note. I am saying that. But otherwise, I was doing Surds with you. If you remember, now what are these Surds? Now, as spoken earlier to you, anything written inside the root, any number which is written inside that symbol of root, which is not a perfect square, in case that it's a square root, and if this is not a perfect square, that number is not a perfect square, any number will be represented as surd. So for that matter, if I write a cube root of 4, that is again a surd, because cube root of 4 is not possible. Likewise, Yes, sir. fourth root of 32 is not possible. Fifth root of 32 is possible, but fourth root of 32 is not possible. So all such possible numbers in which that root cannot be removed, such numbers can be generally expressed as under root of a to the nth power. That is nth root of a. We call it as nth root of a. So if we take out nth root of a, wherein a cannot be raised to any power of n, a cannot be raised to any factor raised to the power n, that is, that under root cannot be removed, then such a number is called a surd. This is called a surd of order n. And therefore from there you could make out that under root 3 is a surd of order 2. Order 2. Because nothing is written, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, तो जिसमें Two. कुछ भी नहीं लिखा होता वहाँ 2 होता है. That is 3. Under root 3 can be thought of as 3 की पावर हाफ. देखो ये हाफ कहाँ से आ गया? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था, हिडन था लेकिन. ठीक है ना? तो Yes, whenever I write root 3, it means 3 to the power half. Therefore, the order of this is 2. Order here is 2. And likewise, if I write cube root of 7, 1 upon 3. so its order is 3. Order of 3. Order of 3 and so on. So you knew about the order the other day. And moreover, you went on to learn about some laws. You went on to learn about some laws of surds, which I'll be repeating so that again you are clear with it. That is, if we have got any surd, of the order n, raised to the power n, if we have got any surd It is raised to the equals power, to a. yes, if you raise any surd of the order n to the power n, obviously, very good Jishan, it becomes equal to a. So that is surd gets disappear. A rational number comes out. Now this a comes out. So under root vanishes. Likewise, there was a second law which I was telling you, that is, if we have got root a, nth root of a multiplied with nth root of b is equals to nth root ab. Very good. It becomes nth root of ab. Likewise, if there was nth root of a, now see, be very clear that this nth root must be written inside this boat. It should not be outside the boat. This is also called umbrella. So it will be in the handle of umbrella, this n must be written. A divided by nth root of b, then it can be termed as nth root of ab. a over b. Nth root of, we call it nth root of a over b. A over b. So these were the three laws which we did for surds. We went on to remove some our misconceptions about the surd yesterday. Why I am repeating this? So that once and for all you clear it in your mind
and what you need to clear is that if root A plus root B is there, it is never equal to root of A plus B. See, I have written it is not equal to. You can see I have written here it is not equal to. It is not equal to A. Root A plus root B is not equal to root A plus B. Likewise, root A minus root B, you must be thinking A minus under root of A minus B, but it is not equal to. I mean, I know nobody is thinking 5 about minus it. Under root A minus under root B is not equal to under root of A minus B. Moreover, this is what you should not think, followed by what you should actually think. That is, if it is root A plus root A, what you should not think that it is equal to under root of A plus A. You should not think that it is under root of A plus A, or you can say under root of 2A. You should not think about it. is equals to 2A. Not think about it under root 2A. In fact, what should you think? What should you think? Yes, you are correct. You should think that root A 2A. plus root A is like apple plus apple. One apple 2A. plus two apple becomes two apples. One apple plus one more apple becomes two apples. So two apples. Apple क्या है लेकिन root A. So two root A. So root A plus root A is like apple plus apple become two apple. So root 2 is considered as one identity. I mean root A is considered as one identity added to yet another the same type of identity become two of such identities. That is 2 of root A. ठीक है? तो like if Yes, you sir. have got root 3 and 4 of such root 3s, may say you subtract say root 3. So it's like 4 apples minus 1 apple, or you can say 3 4. root 3. Yes, excellent. So like 4 of the identities, may say 1 of the identity removed. So 3 of the identities are left, Root है ना? 3. 4 एप्पल में से 1 एप्पल हटाओगे तो 3 थोड़ा ना बचेगा, 3 एप्पल्स बचेंगे. That means you will be left with 3 root 3. This will be the answer. So these are some conceptions which should not be missed. These are the misconceptions. But conceptions, that is the right thing which you should follow, you should know are these things. This is what I was telling you previously in continuation to that now. अब प्रॉपर्टी 7 पे आते हैं. तो उसके लिए अगेन ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको क्लियर हैं तो देन आई मूव टू प्रॉपर्टी 7 which says that is these are applications actually of the surds, so which are given in ML Agarwal beautifully. It says if A, B, C and D are rational numbers, root P is an irrational number, then A plus B root P is equal to C plus D root P, then A is equal to C and B is equal to D. अगर A plus B root P is equal to C plus D root P, very clearly root P is an irrational number, A, B, C, D are rational numbers. तो Yes, कभी sir. भी A is equals अगर to C, आपको B is equals to D. हाँ अगर आपको कभी भी ऐसा मिक्स्ड नंबर इस तरह के, अब देखो ये एक रैशनल नंबर हुआ और ये एक रैशनल नंबर हुआ, इट इज एडेड टू द इरैशनल नंबर and C is added to this irrational number. So rational plus irrational on one side, if equal to rational plus irrational on the other side, then for law, for sure, rational will become equal to rational and irrational will become equal to irrational. Irrational. That means here A will become equal to C and B root P will become equal to D root P, and because root P and root P is same, so cancel, or you can say B is equal to D. तो अगर कभी भी कोई रैशनल पार्ट इक्वल टू अनदर, आई मीन कोई भी नंबर अगर किसी दूसरे नंबर के बराबर है और नंबर में अगर रैशनल और इरैशनल दोनों हैं और दूसरे नंबर में भी रैशनल और इरैशनल दोनों हैं, तो रैशनल वाला पार्ट रैशनल वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा और इरैशनल वाला पार्ट इरैशनल वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा. सो आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू. Next property Yes, is that if root A plus root A and root B are positive irrational numbers, then root A if less than root B, then A is less than B. That is, अगर root A कोई irrational number है और root B भी कोई irrational number है, तो अगर root A is less than root B,
अगर रूट ए इज लेस देन रूट बी, देन फॉर श्योर ए विल बी लेस देन बी, सिंपली बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड. अगर आप इधर अगर 2 इज लेस देन 3 तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ. 2 स्क्वायर विल बी लेस देन 3 स्क्वायर. 4 विल बी ऑब्वियसली लेस देन 9. तो इसी तरीके से रूट ए इज लेस देन रूट बी, मैंने स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, तो रूट ए का स्क्वायर वुड बी लेस देन रूट बी का स्क्वायर. तो रूट ए का स्क्वायर इज ए इज लेस देन रूट बी का स्क्वायर, यानी कि बी. Isn't it? Likewise, if a is a positive number, a rational number, and root b is an irrational number, such that, अब की बार क्या हो रहा है कि a कोई एक रैशनल नंबर है और रूट b कोई इररेशनल नंबर है. a कोई रैशनल नंबर है और रूट b कोई इररेशनल नंबर है, such that कि a is less than root b. Then for sure obviously, हाँ, फॉर श्योर ऑब्वियसली, पहले तो स्टेटमेंट दे दें. फॉर श्योर ऑब्वियसली ए स्क्वायर विल बी लेस देन बी. अभी कैसे आया कि ए का स्क्वायर, अगर ए लेस देन रूट बी था तो ए का स्क्वायर विल बी लेस देन रूट बी का स्क्वायर. तो यानी ए स्क्वायर विल बी लेस देन रूट बी का स्क्वायर, यानी कि बी. तो ये कुछ ऐसे प्लेन एप्लीकेशंस हैं रैशनल इररैशनल को लेकर. कुछ मिथ्या हैं, कुछ मिथ्या दूर करनी है, कुछ नई थॉट्स बनानी है कि अब हम जंप करने जा रहे हैं रैशनल इररैशनल की दुनिया में और उसके सवाल लगाएंगे. ये कंसेप्ट आपके बड़े काम आएंगे. अभी आगे बढ़ते हैं. तो मैं बता रहा था कि इफ़ नाउ आई मूव फॉरवर्ड एंड आई से इफ़ आई हैव गॉट रूट ए प्लस रूट बी काइंड ऑफ अ फैक्टर मल्टीप्लाइड विद अनदर फैक्टर रूट ए minus root b kind Sir, of factor. we will use the expansion formula. Very good. AB plus xy, See? xy plus AB. How beautifully, Jishan, how beautifully formula of factorization as expansions have come into play here. That is, Yes, sir. you have understood it also, that as you knew that x plus y into x minus y becomes equal to x square minus y square. So likewise here it will become root a plus b into root a minus b is nothing but root a square minus root b square. And you know that a is nothing but power half का जब आप स्क्वायर करते हो तो ये 2 और ये 2 कट जाता है. तो ये left with only Yes. a here and only b here. So this becomes the expansion of this. That means this is nothing but a minus b for all of you to understand. ओके. सो लाइकवाइज ये हमने देखो मिटा दिया. Yes, sir. और ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी. लाइकवाइज अगर आपके पास मान लो ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है. इसमें भी आप वही वाला फॉर्मूला लगा सकते हो. अब क्या आ जाएगा इसमें, कोई मुझे बता सकता है? इसमें आ जाएगा a square माइनस b square माइनस बी, b. खाली बी. क्यों? क्यों? Sir, because b square ये हो गया. हाँ सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा, शाबाश. ये a का स्क्वायर माइनस लगा और देखो ये b नहीं बल्कि रूट b का स्क्वायर हुआ. yes sir, तो root b a square स्क्वायर is तो b a only. स्क्वायर हो गया माइनस रूट b का स्क्वायर तो b ही हुआ B. खाली. तो इसलिए देखो ये बन गया. तो कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, फॉर्मूला ही पढ़ा रहा हूँ. अगर फॉर्मूला पता है तो तुम कोई भी चीज दी हुई है यार, नहीं अगली बार अगर तुमको ये दिया हुआ तो भी तुम लगा सकते हो. अभी तुम मुझे खुद बता दोगे कि अगर रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी दिया हुआ है, अब क्या करोगे? अगर फॉर्मूला लगाना आता है, अगर मेथड आ गया तुमको, तो तुम खटाक से इसका आंसर भी बता दोगे मुझे. yes sir. क्या हो जाएगा? root plus a b square square. plus b square. हाँ तो क्या हो गया वो? root a square हाँ. plus b square हाँ तो वो क्या हो is गया? equals to a square plus b square. हाँ देखो गड़बड़ कर रहे हो अब तुम. माइनस अब ये क्या हो गया? देखो ये हो गया sir root- minus b square. तुम तो b तुम माइनस b. बोलते समय सावधान नहीं रह रहे हो. देखो रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया यहाँ? ये तो तुमने सही बोला, इसके बाद क्या हो गया ये? a square minus b square. नहीं ए स्क्वायर नहीं स्वीट हार्ट, नॉट ए स्क्वायर, नॉट ए स्क्वायर, a रूट. minus b square. हाँ ये बोलना चाहिए तुमको. दिस बिकम्स ए माइनस बी स्क्वायर. इट शुड बिकम ए माइनस बी स्क्वायर. वाई? बिकॉज रूट ए का स्क्वायर तो ए हो जाएगा ना.
और माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये पॉइंट तुम्हें ध्यान में रखना है। तो ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? Yes. अच्छा, इसी तरीके से अगर तुम्हारे पास मान लो है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो A व्हाट कैन यू square राइट? plus B square plus 2AB. हाँ, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन जब Root A इसको square खोलोगे, plus root B square हाँ, तो उस वाले plus फॉर्म 2 हाँ, root A bracket root B. वेरी गुड। तो अब ये क्या बन जाएगा? इट शुड बिकम ए A plus B बी प्लस plus 2AB. रूट ए बी, टू रूट ए बी। क्योंकि क्यों हुआ ऐसा? Yes, sir. क्योंकि रूट ए का स्क्वायर हुआ प्लस रूट बी का स्क्वायर हुआ प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी हुआ। अब रूट ए इंटू रूट बी वाला फॉर्मूला अभी लॉ सिखाए थे, रूट ए इंटू रूट बी रूट ए बी। तो देखो 2 रूट ए बी बन गया, और ये रूट ए का स्क्वायर ए और रूट बी का स्क्वायर बी बन गया, यानी कि उससे ही आ गया। तो लाइकवाइज अगर आपसे रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर मांग ले, तो अभी आप ये छूटते मुझे बता दो। minus B square. इट विल A बिकम plus B प्लस बी माइनस minus 2 root AB. देखो इतनी आसानी से ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर लग जा रहे हैं। अच्छा, वन फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ दिस फॉर्मूलाज इज दैट इफ यू हैव गॉट से I am removing this exercise here, I am removing this first thing here, and I am putting the coffin here, that is root a plus root b into root c plus root d. तो जैसे आप root AB plus root BC plus BD. Excellent. Sir, it was used in expansion. हाँ, it was used in expansion. Yes, sir. See, अब इसमें क्या हो जाएगा? जैसे आप नॉर्मली किसी फैक्टर को किसी दूसरे फैक्टर Root A will be divided by root C. वैसे ही आप इसमें भी मल्टीप्लाई कर लोगे, यानी कि रूट ए फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई होगा रूट सी से, तो रूट ए सी हो जाएगा। फिर ये रूट ए मल्टीप्लाई होगा इस रूट डी से, तो रूट ए डी हो जाएगा। अब ए की बारी खत्म हुई दोनों से मल्टीप्लाई करने की, इसका इससे भी बैटल हो गया, इससे इसका भी बैटल हो गया, अब बी बचा हुआ है। तो अब देखो, जब रूट बी मल्टीप्लाई होगा इस रूट सी से, तो क्या बनेगा? रूट बी सी। और फिर रूट बी जब मल्टीप्लाई होगा रूट डी Plus से root BD. प्लस रूट बी डी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इसमें से कोई भी नंबर अगर आ रहा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो रहा हो, तो रूट गायब हो जाएगा अथवा रूट पड़ा रहेगा, तो उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो गई। तो ये आई होप आपको सबको क्लियर है।